Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and today we are here with another new lecture of Management F563. Why I'm saying F63? It's 563 operations strategies, and I'm the same person for the last 13 lectures. That is Dr. Anil Salman. And today, why I'm much more excited, because this is a topic that I really love, and that is something any person who is graduating from the business studies, a change आया है, एक culture एक ऐसा आया है that every other organization in Pakistan or even abroad, we talk about Middle East, talk about USA, talk about Europe, every other person and organization is looking for such competence, and that is your supply chain. Now, operation strategies का link up supply chain के साथ कैसे है, that we'll be talking about in the next few lectures, but what I'm going to talk about is that what basically is supply chain. Usually why I thought I need to give you an introduction of supply chain, because in most of the cases जहाँ पे हम business studies करवाते हैं, major supply chain में अभी नहीं start हुआ. I believe कि Quantitative has started that program, but जो formal है supply chain की training वो अभी नहीं दी जा रही. Even though if you now look at the job advertisements, if you see Procter & Gamble, Unilever, Reckitt Benckiser, Toyota, Honda, Engro. Now, earlier they would be asking for MTOs, yani management trainee offices. They would earlier looking for marketing, finance ke logon ko dekhte the. But now every other organization, now they are looking for supply chain people, because supply chain in the past 10-15 years has emerged as one of the important and crucial ingredient in terms of business. और वही बात कि क्यों हुआ, because of the globalization, कि अब आपके business operations एक जगह पे concentrate नहीं कर रहे. So therefore we need to realize कि जी supply chain is highly important, and अगर हमें थोड़ा सा भी उसका idea हो जाता है, like you know the trick of the town, you can actually land up into a very good position and you can go for that. I would urge and suggest all of you who are right now listening to me that if you ever get a chance, go for such formal training जहाँ पे आपको supply chain की training मिले, यहाँ आप कोई certification ले लें, because आगे चल के आपके हर corporate sector में every organization is going to demand supply chain managers. So this is somewhat a gold mine in terms of getting a good job. Now, the same old routine, just हम हर lecture शुरू करते हैं. I have to give you the recap what we did in the last lecture. Now in lecture number 14, what we talked about was capacity, and capacity को हमने different तरीके से देखा था, and why हमने सबसे पहला हमारा question था कि किस किस्म की हमें capacity चाहिए. Capacity के different वो होते हैं parameters होते हैं, and one of the ingredient parameter for capacity was कि जी आपको demand पता हो. If you can forecast easy demand, if you can forecast the long run demand, you can easily set up your capacity operations. लेकिन अगर हमें demand का पता नहीं, then putting up the whole setup for operations, that will be a little bit tricky. So therefore, the most important part when we are looking into the capacity strategies is कि जी आपको अपनी demand का पता होना चाहिए. Then second जो हमने बात की कि जी हम फिर capacity को demand के साथ कैसे match कर सकते हैं. If the capacity is much more, demand अगर कम है, तब obviously your operating costs are going to be higher. अगर vice versa हो कि जी demand बहुत ज़्यादा है, capacity बहुत कम है, even then your operating costs got high. So हमने इन दोनों को sync कैसे करना है, then we talked about that concept कि जी आपकी demand को कैसे match किया जाए आपकी capacity के साथ. उसके बाद obviously when businesses forecast, when companies forecast about demand, तो demand ठीक है, अगले 5 साल की आप कर सकते हैं, 10 साल के trends देख सकते हैं, but if you're in the business for a longer period of time, like let's talk about Nike, let's talk about Coke, let's talk about Pepsi, or there are so many General Electric, General Motors, when they started off, ठीक है स्ट्रक्चर्स इनके बड़े थे, लेकिन अब ये मैमथ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं. सो उन्होंने अपनी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ किया है. तो आप अपनी कैपेसिटी को किस तरीके से इंक्रीज़ करते हैं, उसके अंदर कुछ चॉइसेस आ जाती हैं कि जी इफ़ आई वांट टू इंक्रीज़ माय कैपेसिटी, इज़ इट वर्थ, क्योंकि दो हमें सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है कि आइदर आई शुड मेक इट और आई शुड बाय इट. अगर आप खुद बनाते हैं तो ऑब्वियसली यू नीड टू इंक्रीज इन कैपेसिटी, और अगर आप आउटसोर्स कर देते हैं, इवन देन उसके अंदर आपके लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके क्वालिटी का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सो दैट द थिंग्स दैट यू आर एक्चुअली आउटसोर्सिंग इट टू अदर कंपनीज वो क्या हो उसके साथ मैच करें. सो वी गॉट इन टू दैट डिस्कशन कि जी आप कब
आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, कैसे इंक्रीज़ करते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट 4 मॉडल्स जहाँ पे आपकी कैपेसिटी लैग कर रही थी, कहीं पे लीड कर रही थी, कहीं पे स्मूथिंग आपकी जा रही थी कि जी जैसे जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज़ कर रही वैसे वैसे आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, दैट वाज कि लोकेशन का, कि जी हाउ लोकेशन इज़ रिक्वायर्ड, हाउ मच लोकेशन इज़ रिक्वायर्ड, वेयर द लोकेशन इज़ रिक्वायर्ड। एंड अगर आपकी कंपनी के सबसेट्स हैं कि जी ऑपरेशन इस जगह हो रहा है, फाइनेंस कहीं और बैठा हुआ है, प्रोडक्शन का आधा पार्ट कहीं और हो रहा है, तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे करें, वेयर शुड योर कंपनी बी लोकेटेड। सो लोकेशन के हमने इश्यूज़ पढ़े थे, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कितना बड़ा सेटअप होना चाहिए, छोटा सेटअप होना चाहिए, ऑल दैट वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। एंड देन डिज़ाइन या लेआउट की हमने बात की थी कि जी हाउ फैसिलिटीज़ शुड बी लेड आउट इन योर ऑपरेशंस। यू माइट हैव आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ एंग्रो, ठीक है। एंग्रो ने वो काम किया था कि जी एक जगह फूड की प्रोडक्शन है, एक जगह कहीं और है, कहीं पे कॉर्पोरेट ऑफिस है। फॉर एग्जांपल नेस्ले का ले लें, लाहौर के अंदर उनका कॉर्पोरेट ऑफिस आ जाता है, शेखुपुरा के अंदर उनका वो मिल का है सारा प्लांट। तो इस वजह से डिफरेंट जगह पे लोग अपना लेआउट रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं, दैट वी डिस्कस्ड। और इसके अंदर आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट देखना है, जहाँ पे मैंने बात की डिमांड की, वहीं पे आपने देखना कॉस्ट की। इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम्स विद द कॉस्ट देन ऑब्वियसली देयर इज़ नो इशूज़, यू कैन सेट अप अ बिगर प्लांट। एंड इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स विद द कॉस्ट, अगर आपकी कॉस्ट इज़ अ बिग कंस्ट्रेंट, जो कि हमने कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट के हेड में पढ़ा था, सो देन यू हैव टू टेक अ डिसीजंस इन अ वेरी जैसे कि इंटेलिजेंट मैनर। और वहीं मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि जी एक आपका वो होती है ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी होती है रिसोर्सेज की, लिविंग विद इन द कंस्ट्रेंट्स। सो दीज आर ऑल द इश्यूज दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर एंड आई होप बाय नाउ यू हैव रेड चैप्टर नंबर 4। Chapter number 5 जो है नाइजल की बुक के अंदर, that is on supply chain. Now what Nigel has started doing is कि उसने डायरेक्टली ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज़ के साथ स्टार्ट किया है। बट इन माई एक्सपीरियंस व्हेन आई एम टीचिंग ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज़ इन माई क्लास, तो स्टूडेंट्स आते हैं बट द बेसिक जो सप्लाई चेन का कोर्स होता है उन्होंने नहीं पढ़ा होता, सो दे नीड टू नो little bit about supply chain. So what I have done is that I have added 2 modules, एक आपका supply chain का है, फिर एक green supply chain का, और फिर supply chain operating strategies के साथ किस तरह link up होती है। So I would say keep your eyes open and listen to it, and I'm sure that you will enjoy it and you will pursue it as a career. And if you are planning to do your thesis, then I would recommend you कि जी आप अपनी supply chain के अंदर करें, क्योंकि it has become such a money minting business कि जी अब आप green supply chain के अंदर जा सकते हैं, virtual supply chain के अंदर जा सकते हैं, और operations के अंदर supply chain play a very crucial role कि जी आपके businesses किस तरीके से network use करते हैं, networks आपके आ जाते हैं। अब there's a new terminology called the neural networks के अंदर आ जाते हैं। So you can actually make these supply chains very handy, और जिस तरह आपके logistics काम करते हैं, जिस तरह आपके transport networks काम करते हैं, तो ये सारी क्या हो रही होती है, आपकी supply chain हो रही होती है, ठीक है। So you need to understand कि supply chain कैसे function करती है। Now the question comes कि why we are so much interested in your supply chains and what is its importance, ठीक है। अब क्या आ जाता है कि जब हम बात करते हैं कि क्यों हम इंटरेस्टेड हैं और क्यों ये वाला डिसिप्लिन एकदम इमर्ज करने लग पड़ा, सो बेसिकली ये है कि इन्वायरमेंट्स अब क्या होती जा रही हैं, अनसर्टन होती जा रही हैं। इन्वायरमेंट्स पहले भी अनसर्टन थी, लेकिन इस तरीके से हमारे ऑपरेशंस इंटीग्रेटेड नहीं थे, इस तरीके से हमारे ऑपरेशंस weren't that fast. That's why now what is happening that in our environment, in our present era, the operations have become very complex. अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आपने देखना है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आपने रिमूव करना है, तो व्हाट यू डू इज़ वी हैव टू लुक इनटू मैचिंग द सप्लाईज एंड डिमांड। वही बात जो हम पीछे बात करते हैं इन द कैपेसिटी स्ट्रैटेजीज़ कि जी आपने इस डिमांड और सप्लाई को मैच करना है। बट अब अनसर्टेनिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो गई है। There's one professor at Harvard and what he says that कि earlier we would go for planning, हम प्लानिंग 5-5 साल की 10-10 साल की किया करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, रिस्क इतना ज़्यादा आ चुका है कि अब उस प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। बट ऑब्वियसली आपको प्लानिंग करनी चाहिए बिकॉज प्लानिंग हेल्प्स। बट व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि आप अब जो प्लानिंग कर रहे हैं
it will keep on changing क्योंकि आप जो external environment है that is bringing so many changes. It brings और इतने changes आपके drastic होते हैं कि we never know कि भी 2008 का financial crisis आया था, US had no idea कि क्या होगा and एकदम उसका सारा business environment change हो गया. Same with 1997 का जब East Asian crisis आया, यही जो Asian Tigers थे ये क्या बन गए बाद में, ठीक है. So the point is कि uncertainty is for sure, it's there. No matter whatever you do, are you complete sure that you're going to listen to this lecture for the next 60 minutes or for the next 58 minutes? The reason is अगर अभी लाइट चली जाए, ठीक है, अभी अगर आपकी कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्रैश कर गई, so नहीं करेगी क्रैश, but if the hard disks get crashed but you knew about it, you never knew about it. So therefore uncertainty is there always. Now what a manager's job is कि manager क्या कर रहा होता है, manager इस uncertainty को हम remove नहीं कर सकते. We cannot eliminate uncertainty. What we are doing is that we are actually minimizing the uncertainty. और जहाँ पे आप uncertainty के लिए buffers लगा देते हैं या minimize कर लेते हैं, वहाँ पे आपकी business decisions क्या हो जाती हैं, sustainable हो जाती है. So what we have to do as good business managers is that we have to minimize the uncertainty. अब ये मैं कुछ examples I'll just you can see it on the slide over here कि Boeing की example दिया that Boeing announced a $2.6 billion write-off in 1997 due to raw material shortages, internal and supplier parts shortages and productivity inefficiencies. Now $2.6 billion is a huge loss. और किस वजह से हो रहा है, आपके जो बैक एंड पे आपके जो operations चल रहे थे उनकी वजह से कि जो आपकी shortage आ रही थी. Then US Surgical Corporation, another big company, they also announced $22 million loss in 1993 due to larger than anticipated inventories on the shelves of hospitals. Inventories उनकी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है. Then comes IBM. IBM ने क्या किया, IBM sold out its supply of its new Aptiva PC in 1994, costing it millions on potential revenue. HP, Dell ने found it difficult to obtain important components for its PC from Taiwanese suppliers in 1999 due to massive earthquake. क्योंकि वहाँ पे earthquake आ गया था. वही अभी हमने जापान का भी पढ़ा था जब वहाँ पे triple tragedy आई, सुनामी आया, earthquake आया और radioactive material की जब वो आपकी लीकेज हुई. सो जितनी भी आपकी सप्लाई चेन थी, जो भी बिजनेस हमारे जापान के साथ थे, उसके अंदर क्या आ गया था, बॉटलनेक आ गया था. नाउ US firms almost spends $898 billion on supply chain related activities in 1998. Now today, this year is 2015, 2016. So now you can imagine कि ये amount कहाँ तक जा चुका है. I'm talking about 10 years back. Now, this was the scenario कि companies को कितना ज़्यादा पैसे लगाने पड़े due to their inefficiencies in their supply chain, due to either inventories उनकी ज़्यादा हो रही थी, either उनका raw material it wasn't getting right on time, but because of that they were facing a lot of problems and they were spending huge amount of money. So let's talk about कि अब supply chain क्या करती है. अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आपकी बिजनेस वर्ल्ड ग्रो करती जा रही है, हमारे जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं. और PLCs के अंदर हमने ये पढ़ी थी दैट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. अब PLC जितना बड़ा है, जितना सस्टेनेबल है, उतना अच्छा है. लेकिन टेक प्रोडक्ट्स के अंदर व्हाट यू वुड सी कि जी आपकी जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो बहुत छोटे हैं. एक साल के बाद i5 आया, फिर 5S आ गया, फिर 6 आया, 6S आ जाएगा, i7 आ जाएगा, एंड इट विल नेवर स्टॉप. सेम विद सैमसंग. सो टेक्निकल जो टेक प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी सप्लाई चेन के जो आपकी सप्लाई चेन है, जो आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स हैं बहुत छोटी हैं. अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि the problem with this is that there is less opportunity to accumulate a historical data on customer demand, क्योंकि एक साल के बाद कस्टमर की डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, उसकी चॉइसेस बदल जाती हैं. वाइड चॉइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मेक इट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट डिमांड. अब हम डिमांड जो कि पीछे भी हम पढ़ रहे थे कैपेसिटी के अंदर कि जी आपको डिमांड फोरकास्ट कर लेनी चाहिए, हमें डिमांड नहीं पता चलेगी. नाउ इफ़ यू आर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट जिसके अंदर इतने हाई टेक फीचर्स हैं, इतने उसके अंदर स्पेक्स डाले हुए, कैन वी रियली नो द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट? वी कांट. It was Steve Jobs जिसने एक iPhone दिया and it brought revolution.
and you don't know that how people are respond to it. शुरू में आपने देखा मैक के साथ क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट या जो थे IBM, they were the market leaders. उसके बाद आहिस्ता 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 then Mac became famous. So the problem is कि आप कहाँ पे अपने आप को स्टैंड करते हैं और किस तरीके से उस डिमांड को मेजर करते हैं, दैट इज द बिगर क्वेश्चन मार्क. एंड पीपल हु कैन डू दैट, well, they are the business gurus, and people who are unable to determine the demand, उनका प्रॉब्लम आ जाता है. नाउ द थिंग इज कि आपने एक साल के लिए किया, आपके पास प्रीवियस डाटा है, कोक चेंज नहीं होती, ठीक है, कोक के लिए इजी है डिमांड को फोरकास्ट करना, लेकिन अब एक टोटली नया मैं प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ. आई हैव हिस्टोरिकल डाटा दैट पीपल लव्ड 5, आई हैव 5, but I don't have the historical data. How they are going to respond with reference to 5S, क्योंकि innovation इतनी fast आ रही है. So अब प्रॉब्लम आ जाती है because you don't have any previous data. So how you can say कि जी मैं IS6 की इतनी प्रोडक्शन करूँ तो एकदम डिमांड आ जाएगी. So you start determining some models. आप मार्केट के अंदर देखते हैं, आप वेंडर्स को देखते हैं कि भी what is the trend, are people really thirsty for new kind of technology, and if customer is looking for technology, then what kind of technology they are looking for. One of my students, he's working on his doctoral thesis on innovation, and what he says that innovation comes from the customer end, and firms from the knowledge they actually fulfill their innovation, the innovation demand. ठीक है, so customer कहता है कि मुझे ऐसा फोन दो जिसके अंदर ये चीजें आए. People say कि जी ऐसी apps हों कि जो है, it is we as people, we are actually expressing our pain, ठीक है, to people, to firms. और ये firms क्या हैं? These are the knowledge hubs. और ये knowledge hubs क्या करती हैं? Then they start working on it कि भी look, पाकिस्तान के अंदर अब कई ऐसी apps बन गई हैं. For example, you can easily have this carpool. You can start going for vacations and you can use these websites जहाँ पे अब ये क्या है कि जी लोग होटल्स में नहीं रहना चाहते, लोग कहते हैं हम कहीं पे सस्ता घर ले लें और हम सारे पूल कर लें. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्रैवलिंग टू US, तो जिस बंदे का घर US में खाली है, ही कैन से कि जी यू कैन लिव हियर, व्हेन आई कम टू पाकिस्तान आई कैन. सो इस तरह आपकी शेयरिंग चल रही है. How come they come to know? How come they devise such mechanism? किस तरह ये websites बन जाती हैं? Because I tell them कि this is what I'm looking for. This is इस किस्म से मेरी problem solve हो जाएगी. A number of time. आजकल एक ad आ रही है कि जी there's X person who wanted to open a mobile shop and he never had this capital कि अपनी mobile shop खोल सके, तो उसने क्या कि उसने XYZ website के ऊपर अपने mobile sets डाले and automatically in the virtual space he got so many hits, उसने सारे mobiles लगा दिए and he became an entrepreneur. So आपकी जो मॉडल्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं. ट्रेडिशनल मॉडल्स नहीं हैं. इफ आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द डिमांड, देन आई हैव टू लुक डीपर, आई हैव टू इंटरैक्ट विद द कस्टमर्स. फिर वो मुझे बताएंगे कि भी इस किस्म का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, और आपको फिर आइडिया होता है कि भी ओके माई प्रोडक्ट इज गोइंग टू स्वीप द मार्केट और इट इज गोइंग टू बी अ फेलियर इन द मार्केट. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट कि जी अब हमारे PLCs क्यों सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स क्या हो गए हैं, बहुत छोटे हो गए हैं, हम डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर सकते, इस वजह से हमारी PLC छोटी हो गई है. देन द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजीज सच एज इंटरनेट enable greater collaboration between supply and trading partners. अगर आप नहीं वो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू दिस इंटरनेट, अब हमारे कनेक्शंस क्या हो गए. नाउ आई कैन प्रेफर बाइंग इट फ्रॉम चाइना रादर देन मेकिंग इट माई सेल्फ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें चीपर हैं, मैं वहाँ से बेहतर लेके अपने आप को ट्रेडिंग के अंदर लेके आ सकता. और अगर मैं नहीं करता, if I'm not going to use this thing, then my competitor will do it. For example, आप newspapers में देख लें, newspaper agencies now, newspaper organization, New York Times, Washington Times, the News, Dawn, and all these. Now they are forced कि जी they have to come bring their newspapers online. अब जो reading वाला जो था material कि जी आपको Sunday की morning वैसे newspaper daily आता है, but usually most of the people have asked for the Sunday newspaper, वो भी ऑनलाइन कर लेते हैं, न्यूज़ स्टिकर्स आ गए हैं, सारा कुछ आ गया. सो अगर आप नहीं करोगे तो आपका कंपेटिटर कर लेगा. दैट्स व्हाट फोर्स्ड Zara the clothing apparel company. अब Zara ने अपने बड़े बड़े स्टोर रखे हुए हैं and all that stuff, and ultimately it
pushed them कि भी सारी अब JC Penney और all these organizations ये जो fashion industry वाली थे fashion houses सारों ने अपने कपड़े online रख दिए थे. Zara had to go online no matter कितना ही वो resist करता उसके सारे competitors निकाल लिया था. Now people want it. In Pakistan, Khadi, this Junaid Jamshed and all these Gul Ahmed, they have all now placed their clothes on internet because now people don't have time. They just order online. They like to see. They don't have time to make decisions at the shop. So वो क्या करते हैं, online देख लिया, order कर दिया, जाके pick कर लेंगे, पहले online देख लिया and they browse around के जी ये नए designs आ गए and then they order it. So models आपके change होते रहे. Internet ने आपकी life को क्या कर दिया, बिल्कुल change कर दिया. Now, major buyers such as Walmart demand a level of supply chain maturity of its suppliers. अब आपकी demand आने लग पड़ी है from these major ये जो होते हैं retail stores हैं कि जी आप अपनी supply chains को effective बनाएं, आपकी supply chains बहुत अच्छी होनी चाहिए, they need to be mature supply chains, ठीक है? And then we have now technologies on supply chain management in the market readily available. RFIDs हैं उनमें से, availability of SCM technologies on the market. Firms have access to multiple products with which they integrate their internal processes. I was looking into one of the processes ये जो है Al-Fateh है in Lahore, now it's in Centaurus also. So वहाँ पे अब क्या आता जा रहा है, they are using all these computers. जिस तरह आप वहाँ पे जाते हैं और अपनी inventory system उन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे ही आप checkout करते हैं तो उनको पता होता है कि जी अब ये वाला मेरा जो material है ये ख़त्म होता जा रहा है. शुरू में नहीं था ऐसा, शुरू में बंदे जाते थे देखते थे. So therefore now people have started using these tools and they have integrated it to the internal processes. Same like with Zara. जैसे ही Zara की shop से वो उसके कपड़े checkout होते हैं, जो प्रोड्यूसर है यानी जो फैक्ट्री है वो जो कपड़े बना रहे हैं उनको पता होता है कि ये डिज़ाइन अब ख़त्म हो रहा है, लेट्स गो फॉर न्यू डिज़ाइंस, ठीक है? देन greater sharing of information between vendors and customers. Supply chain अब इस वजह से important है because अब vendors और customers का जो linkage है वो ज़्यादा strong हो गया है. अब information वो readily information वो share कर लेते हैं. उसके बाद horizontal business processes are being replaced by the vertical departmental functions. उसके बाद now people have moved from mass production to customized production. I want to look different. I want to have a different product. तो जिस तरह मैं चाहता हूँ तो आप आपकी companies के अंदर या आपकी organizations आपको वैसी choice दे देती हैं. For example, Dell is one of the companies. आप कहते हैं I want a blue screen. blue आपको उसका top मिल जाता है, red मिल जाता है, green मिल जाता है. आप अपने कंप्यूटर को जैसी आप उसको स्पेक्स देते हैं वैसे ही वो बना के आपको दे देते हैं. सिमिलर गो टू होटल्स, वो कहते हैं इट्स अ कस्टमाइज्ड फूड, डू यू वांट योर स्टेक वेल डन, डू यू वांट कैसी आप रहे हैं वो ऐसा आपको बना के देते हैं. सो जो स्टैंडर्डाइजेशन का है, जो मैस कस्टमाइजेशन का जो टाइम था वो भी एज सच अब ख़त्म होता जा रहा है. कोक ने इफ़ यू रिमेंबर लास्ट रमदान उन्होंने किया था कि जो उन्होंने कोक की बॉटल्स मार्केट के अंदर लॉन्च की एंड यू कैन हैव देम प्रिंटेड ऑन देयर ओन. कस्टमाइजेशन, एक इतनी बड़ी जायंट कंपनीज और आप ये लिख रहे हैं आई लव यू मामा, आई लव यू बाबा, आई लव ब्ला 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 ब्ला, ऑल दैट स्टफ इज बीइंग रिटन और वो आपके लिए आपके डोर स्टेप पे आपको पहुंचा देते हैं. दैट्स अमेजिंग. Why? Because आपका जो कस्टमर का शिफ्ट है वो चेंज हो गया है. They have moved from mass customization to they have moved from mass production to customization. Cakes, earlier there were bakeries like Shazan हुआ करती थी, Gourmet हुआ करती थी, standardized केक होते थे. ईद पे एक ही स्टाइल के आपको 10-15 केक हुआ करते थे. Now people have opened these cake shops in their houses. एक दो baking के courses किए, they make their Facebook page and then they start making cakes, customized cakes for everyone. आप कहते हैं जी मैंने Ben 10 का बनवाना है, मैंने जनाब केक उसका बनवाना है, Batman का बनाना है, Spider-Man का बनाना है. All that kind of stuff is being made by people because that is highly mass customized because people they want to look different, they don't want to buy the same kind of thing. That's why अगर आप देखें पिछले 5 सालों में एक नया ट्रेंड आया lawn. Earlier it was a cheaper form of clothing but now it has become a very elite kind of, क्योंकि हर दूसरा
बंदा या खातून whoever has some designer वो sense नहीं भी होगी but बन जाती है, and what they do is कि this is exclusive, this is just one pair, and if you wear, no one here in Pakistan will be wearing such clothes, and that's why the designer clothes are becoming in fashion, mass customization. Then increased reliance on purchased materials and outside processing with simultaneous reduction in the number of suppliers. There's a company called Starbucks. ठीक है, Starbucks ने ये strategy उसने use की that they have reduced the number of suppliers. Now that's very interesting that why you are reducing number of suppliers, क्योंकि जितनी आप number of suppliers आपके पास ज़्यादा होते हैं तो you don't have supply bottlenecks. But Starbucks की philosophy ये है कि जी आप जितना कम वेंडर्स के साथ रखें, जितने उसके कम सप्लायर्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी दूध की क्वालिटी बेहतर रहेगी, बिकॉज कॉफ़ी बीन्स के साथ भी वो यही करते हैं. दे से दैट वी हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दीज सप्लायर्स एंड दे आर पार्ट ऑफ अ कंपनी. सो उनके साथ जो बार्गेनिंग पावर है वो भी स्ट्रांग हो जाती है. देयर आर फ्यू सप्लायर्स और उनको ज़्यादा ऑर्डर मिल रहा होता है, ज़्यादा क्वान्टिटी मिल रही है. बट इफ़ यू हैव मल्टीपल सप्लायर्स, क्वालिटी इशूज़ भी आ जाते हैं और फिर आपकी नेगोशिएटिंग पावर भी आपकी उस तरीके से स्ट्रांग नहीं होती. सो नाउ द रिलायंस इज कि हम अपने जो रॉ मटेरियल है या जो सेमी रॉ मटेरियल हम बाहर से अब ले रहे होते हैं. हम खुद ही नहीं, सारी सप्लाई चेन में हम रॉ मटेरियल हम खुद नहीं वो ओन करते. Then value that can be extracted by manufacturing is declining as cost of materials and distribution climbs. तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती जा रही है? That is declining जैसे जैसे आपकी cost of materials और distribution क्या हो रही है? Increase हो रही है. Then now we have started talking about organizations और जो process उनके अंदर flexibility होनी चाहिए, which we have been talking about in the previous lectures also, कि आपकी जितनी flexibility होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा. Then necessity to coordinate processes among many sites. अब एक साइट पे एक जगह आपका प्रोसेस नहीं होता ना, देयर आर सो मेनी डिफरेंट साइट्स जहाँ पे आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने ऑपरेशंस उसने रखे हुए हैं. नाउ दैट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी और हर साइट का एक दूसरी साइट के साथ कोऑर्डिनेशन रहती है. अगेन गिविंग यू अ लिविंग एग्जांपल, पीटीसी कोड़ा खटक एंड पीटीसी जेला में दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन रहती है. एक है पंजाब के अंदर, एक है आपकी केपीके के अंदर. Now, employee empowerment and the need for rules-based real-time decision support system. अब आपके employees वो नहीं रहे, अब क्या होते चले, flat structured होते चले. Employees are more empowered, they are delegated, they can make decisions. So that's why they need real-time data and real-time decision making. अब आपकी decision making is in the present scenario they have become much more faster. It has become much more agility उसके अंदर ज़्यादा आ गई है. एंड लास्ट क्या आ जाता है, कंपेटिटिव प्रेशर एंड कंप्रेस्ड पीएलसी. वो हमने पहली बात करी कि पीएलसी आपके शॉर्ट हो गए हैं और अब जो हमारी नेसेसिटी है टू इंट्रोड्यूस न्यूअर प्रोडक्ट दैट हैज़ बिकम मच मोर फास्टर. देन companies are restructuring their production facilities on a global basis. पहले तो होता था कि जी आप अपनी सिर्फ अपने ही रीजन के अंदर करते हैं, लेकिन आप जब restructuring की बात करते हैं तो companies overall restructuring कर रहे हैं. And what are they doing is there is low cost, high volume data processing communication are revolutionizing the control system. Earlier it was the अब तो MLEs जो monetary and valuation ये भी अब online होने लग पड़ी है. ठीक है, earlier you had to go on the site, but now क्योंकि रियल टाइम कैमराज लगे होते हैं, वहीं से अपनी मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे थे और आपको आपके इतना डाटा होता है दैट यू कैन मेक बेटर डिसीजंस एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. नाउ एक और कन्फ्यूजन है कि सप्लाई चेन व्हाट इज़ नॉट सप्लाई चेन. ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सप्लाई चेन इज़ ओनली इन ऑपरेशंस, सप्लाई चेन इज़ ओनली इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन इज़ ओनली इन procurement, but that is not the case. Among us, the misunderstanding, supply chain is not inventory management. Inventory management is part of supply chain. Supply chain is not just logistics management. It's not supplier partnerships. It's not driven from supplier side. It is not a shipping strategy. It's not distribution management. It's not a logistics pipeline. It's not procurement management, and it's not computer system. ये चीज़ें अगर आप कहो जी मेरा computer system supply chain है, it's a wrong notion. Sometimes आपको ये when you are going for this assessment tests of Engro या आप Unilever में जाएंगे कि what is exactly supply chain, तो people will say procurement होती हैं, logistics होते हैं. That is not supply chain. That is just a sub part of your supply chain. So why is supply chain management difficult? The reason is
कि नंबर वन हमने अभी पढ़ा कि जी अनसर्टेनिटी इज इनहेरेंट इन एवरी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन्स बनाना कोई इजी काम नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट वर्क, बट अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि इसमें क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। वाई देयर इज़ अनसर्टेन, बिकॉज इसमें ट्रैवल टाइम आ जाता है, आपकी मशीन्स का ब्रेक डाउन आ जाता है, आपके नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, वॉर्स आ जा सकती हैं, कैटास्ट्रफीज हो सकती हैं, उसके बाद आपकी लोकल पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें आपकी सप्लाई चेन को क्या कर देती हैं, अफेक्ट करती हैं। देन the complexity of the problem to globally optimize a supply chain is significant. किस तरह कि जी आपकी supply chain क्या करती है, it minimizes the internal costs, it minimizes the uncertainty and it deals with remaining uncertainty. So अगर आप जितनी अपनी supply chain को optimum रखते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है that your supply chain in shock से it becomes resilient, क्योंकि अगर आपकी थोड़ा सा भी supply chain में bottleneck आ गया, आपका total business क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। Then we do not have proper guidelines at the moment for all the supply chain stakeholders, यहाँ अगर आप उनको कह लें partners, हम सारों को नहीं पता होता। It's the same thing जब हम 6 Sigma अप्लाई कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट तो चाहिए, बट आपकी जो लोअर मैनेजमेंट है उसको नहीं पता होता what is happening. So supply chain is basically a philosophy that has to be taught throughout from top management to the lower management. Then we have failure to develop measures for monitoring alliances. Then we have inability to broaden the supply chain vision beyond procurement or product distribution to encompass large business processes. यानी वही हम procurement के अंदर फंसे हुए, उससे आगे गए नहीं, but supply chain is much more wider as compared to that. Then we have an inability कि हम integrate नहीं कर सकते अपने company के internal processes को एक दूसरे के साथ. Then there is always lack of trust inside and outside of the company. उसके बाद आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके भी रेजिस्टेंस होती है। ऑर्गेनाइजेशन को रेजिस्टेंस इस वजह से होती है बिकॉज सप्लाई चेन इज नॉट जस्ट वन पोर्शन, इट्स द होलिस्टिकली फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल द फिनिश, फ्रॉम सीड टू स्मोक, यानी सब कुछ है। अब अगर एक सप्लाई चेन मैनेजर आता है और वो प्रोक्योरमेंट वालों को भी पूछ रहा है, वो मार्केटिंग वालों को भी पूछता है, वो सेल्स वालों को भी पूछता है, वो फाइनेंस वालों को भी पूछता है, देन दे वुड से भाई हु आर यू टू क्वेश्चन अस, हमारा तो अपना डिपार्टमेंट है, हमारा तो सप्लाई चेन के साथ कोई तल्लुक ही नहीं। सो दैट gives me that creates a problem in terms of asking that okay, how can one person be responsible for all of the organization. Then lack of buy-in by top managers, and problem आपके top managers को हो रही होती है because उनका span of control क्या होता है, different हो जाता है। Then आपका जो supply chain की जो success वही है कि every system is integrated with each other, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, there is always lack of integration in supply chain. So what exactly is supply chain? After going through के why it is important, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो supply chain की जो definition है, what we do is that it is a process of collaboration between trading partners that manages the flow of products, informations and funds from the point of raw material to consumption. Raw material to consumption, seed to smoke. So that is basically your holistic concept of your supply chain management. It is also referred as a logistic network. आपके सारे logistics उसके अंदर आ रहे होते हैं. Suppliers, manufacturers, warehouses, distribution centers and retail outlets, ये सब उसी के अंदर आते हैं. And the raw materials, the work in progress inventory, finished products and the flow between the जो इस फैसिलिटीज़ के दौरान जो फ्लो कर रहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें यू विल सी, थोड़ा सा अगर करीब आके देखें या इफ़ यू हैव द स्लाइड्स यू विल हैव अ लुक एट इट कि जी आपका सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स फिर वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस से फिर वो कस्टमर्स के पास जाता है। लेकिन अगर सप्लायर्स में भी वो देखें, सप्लायर्स भी मटीरियल कहीं से ले रहे हैं, फिर बीच में ट्रांसपोर्टेशन आ रही है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स आ रही हैं, फिर इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है। सो इट्स अ कंप्लीट नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज़, और अगर कोई भी नेटवर्क आपस में इंटीग्रेट नहीं होगा तो आपकी सप्लाई चेन उससे ब्रूटली अफेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप देखें सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेयर हाउसेज एंड योर कस्टमर, एंड एवरीवन इज इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। किसी पार्टी को भी देख लें, कोई ऐसा एरो नहीं है जो एक दूसरे के साथ नेटवर्क नहीं हो रहा। सो इट्स बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज। एक और मौसूफ ने मुझे बताया कि आई आस्क्ड हिम व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ही सेड मैनेजिंग द चेन्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो भी आपकी सप्लाई की चेन्स हैं उन सारों को अगर आप मैनेज कर लें, दैट इज बेसिकली योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। So
एक और इसके अंदर आता है, इसको हम कहते हैं प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, बाय। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मैनुअल्स आते हैं, ठीक है। अब उन मैनुअल्स के अंदर वो बताया होता है कि जी आपने किस तरीके से इसको बनाना है। फॉर एग्जांपल आपको आरबी कांटेक्ट करता है कि जी प्लीज़ आप मेरी सप्लाई चेन बना दें, तो आप किस प्रिंसिपल बनाएंगे? दिस वन, प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, बाय। प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, बाय। रिमेंबर दैट दिस इज द टेक पार्ट, कि जी आपने जब सप्लाई चेन्स को बनाना होता है देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लायर्स, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। तो आप उनको नेटवर्क को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं कि जी आप पहले प्लानिंग करेंगे, फिर कहाँ से आएगा मटेरियल, फिर उसको बनाएंगे, फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और बाद में वो कस्टमर खरीदेगा। सो दैट इज अनदर व्यू ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ अप्रोचेस यूज्ड टू एफिशिएंटली इंटीग्रेट, किस किस को कर रहा होता है? सप्लायर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, वेयर हाउसेस को एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को, सो दैट द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। किसका, तो अगर ये इंटीग्रेटेड अच्छे हैं तो फिर आपके प्रोडक्ट कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इन द राइट क्वांटिटीज, इन द राइट लोकेशंस, एट द राइट टाइम। सिस्टम वाइड कॉस्ट्स आर मिनिमाइज्ड, आपकी से कॉस्ट्स कम हो जाती हैं, एंड योर सर्विस लेवल, सर्विस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो रही हैं, द कस्टमर इज हाईली सेटिस्फाइड। अब कुछ आपके सप्लाई चेन के ड्राइवर्स आ जाते हैं, लाइक व्हाट आर द ड्राइवर्स बिहाइंड योर सप्लाई चेन। अगर यहाँ पे आप देखें देयर आर 5 ड्राइवर्स। नंबर 1 इज योर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर व्हाट यू आर लुकिंग इन, कि प्रोडक्शन में आप कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चंस का आप आंसर करते हैं। तो ये है कि जी आपकी प्रोडक्शन कैसे होनी है। नंबर 2, जब आपने प्रोड्यूस कर लिया फिर वो चला जाता है आपकी इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हाउ मच टू मेक एंड हाउ मच टू स्टोर, कि जी कितना आपने बनाना है और उसने कितना स्टोर करना है और आगे से कितना वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। वंस यू हैव स्टोर्ड इट तो फिर आप चले जाते हो नंबर 3 के ऊपर, दैट इज योर लोकेशन। अब लोकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इट्स बेसिकली व्हाट, वेयर बेस्ट टू डू व्हाट एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग इन लाहौर, देन आई एम वो जो है उसको मैंने भेज दिया है गुजरांवाला, या मैंने फैसलाबाद भेज दिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि उस लोकेशन में उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, ठीक है। एंड देन कम्स योर ट्रांसपोर्टेशन, हाउ एंड व्हेन टू मूव द प्रोडक्ट, कब आपने उस प्रोडक्ट को मूव करना है। और इन सारे प्रोसेसेस को आपकी जो है प्रोडक्शन, आपकी जो है इन्वेंट्री, आपकी जो है लोकेशन, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसको एक हब कंट्रोल कर रही है, दैट इज योर इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है, यही प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हो रही है। इसी इन्फॉर्मेशन से आप डिसीजंस ले रहे हैं इन इन्वेंट्री, इसी इन्फॉर्मेशन से आप ट्रांसपोर्ट के डिसीजन ले रहे हैं और इसी इन्फॉर्मेशन से आप इन्वेंट्री की डिसीजंस ले रहे हैं। नाउ 2 चीज़ें आ जाती हैं कि जी आपकी सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव है या आपकी सप्लाई चेन इफेक्टिव है, ठीक है। अब इन्हीं ड्राइवर्स के ऊपर अगर हम देखें तो हमने इन 2 फैक्टर से अपनी देखनी है, दैट आई हैव अ रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन और हैव अ इफेक्टिव सप्लाई चेन। अब यहाँ पे आई विल जस्ट रीड आउट the right combination of responsiveness and efficiency in each of these drivers allows supply chain to increase throughput while simultaneously reducing the operating and inventory costs. अब क्या होता है कि जितनी ज़्यादा आपकी सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड इफ देयर इज एन अर्थक्वेक, तो एकदम आपकी डिमांड फॉर मेडिसिन में भी बढ़ गई है, तो आप वेट ना करें, ठीक है। You have this much amount of agility in your supply chain कि जैसे ही वो आया है, इंसिडेंट हुआ है, आप एकदम वो चीज़ें वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, ठीक है। दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। अब पहुँच तो गई हैं लेकिन सारी मेडिसिन टूटी हुई थी, दैट इज नॉट इफेक्टिव। सो रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिवनेस का कॉम्बिनेशन आपने हमेशा बरकरार रखना होता है। यू हैव टू मेंटेन दैट सो दैट जब आपका प्रोडक्ट पहुंचे सो इट कैन एक्चुअली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनिंग इट कि वेदर वो वाला ठीक पहुंचा है या वो गलत पहुंचा है, कितनी स्पीड के साथ पहुंचा, एजिलिटी इन द सप्लाई चेन। अब आ जाता थोड़ा सा हिस्ट्री। I believe that up till now you have understand the concept of supply chain. Now let's go where supply chain start कहाँ से होती है। When in the start of the lecture I said कि जी supply chain was basically 10-15 साल पहले अगर आप देखेंगे, लेकिन अगर आप पिछले 6-7 साल का ट्रेंड देखें तो even the Pakistani corporate sector, your supply chain has been very effective, it has been very improving. But now when we talk about past कि स्टार्ट कहाँ से होती है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो अगर हम 3000 BC की बात करें तब भी सप्लाई चेन थी, ठीक है।
सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट तब से चल रहा है एंड व्हाट वी आर लुकिंग इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन इज बेसिकली कि जी आपकी ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी व्हेन इट इज कमिंग, देन कमिंग ऑन टू ADs, that comes in 1950s. We talked about the total cost awareness कि भी cost को आपने कम करना है. फिर हम 1950s के अंदर हमारी बात आ गई कि जी आपने customer service पे डिपेंड करनी, customer should be very happy. 60s के अंदर then we talked about inventory management. 65 के अंदर हमने outsource करने लग पड़े, globalization की waves आ गई चुकी थी. We started moving our processes out of the country, out of the regions, wherever there was cheaper labor. 70s के अंदर आ गई आपकी material requirement planning, we call it as the MRP, या पढ़ चुके हैं operations management में. फिर हम BOM पढ़ा, bill of materials, और फिर हमने operational planning की बात करना शुरू कर दी. ठीक है, अब 70s आ जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि ऑपरेशनल इंटीग्रेशन और सिक्स सिग्मा आया. 1980s के अंदर फिर मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, जस्ट इन टाइम, जेट आपका लिखा हुआ जस्ट इन टाइम आया, मटेरियल्स मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स पे जोर आया. देन 85 के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे आया. 90s के अंदर फिर क्या आ जाता है, SCM, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटीग्रेटेड परचेजिंग, फाइनेंशियल्स, ग्लोबलाइजेशन. आज 1995 के अंदर क्या आ जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप एंड एंटरप्राइज एक्सटेंशन. नाउ दैट वाज ऑल पास्ट. लेकिन पास्ट में मैं BC से अगर स्टार्ट करूं, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड कुछ ऑथर्स ने इसको ट्रेस किया दैट हु इज द बेस्ट सप्लाई मैनेजर बिफोर क्राइस्ट. And guess what that would be? No, that would be Alexander the Great. People would say that Alexander the Great was basically the best supply chain manager. Even I was amazed when I heard about how can Alexander, he's not an MBA, and how can he be a good supply chain manager? So the concept being that. But what they say is Alexander was the best supply chain manager, reason being कि जैसे he was a young guy who actually covered the whole world. ठीक है, जितना उसको एरिस्टोटल ने बताया था कि भाई this is what the world looks like, उसने उस सारी वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया था at the age of his teens. Now for this you need a very swift army, you need expert warriors who can actually go from one point to another, और आपकी फतूहात का सिलसिला जारी रहे. And for that obviously you are not coming back home कि जी मैं सुबह लड़के वापस शाम को घर आ जाऊंगा, मैसेडोनिया के अंदर वापस आ जाऊंगा. That's not true. You are just moving forward, you are just marching forward. लेकिन इसके अंदर एक तो आपके सोल्जर्स बहुत एजाइल, बहुत फिट होने चाहिए. नंबर 2 योर हॉर्सेस. ठीक है, तभी आप डिस्टेंसेस कवर करेंगे. Now what happened was that why Alexander became famous, reason being why he's the best supply chain manager. अब उसने जो राउट्स लिए उसने वो लिए जहाँ से वाटर गुजरता था. एंड व्हाट ही डिड वाज कि अगर तो आप घोड़ों के ऊपर सारा सामान लाद देंगे तो घोड़े की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. उसने कहा जी ऑन द हॉर्स देयर शुड बी ओनली द सोल्जर एंड हिज वेपन, दैट्स इट. जो आपने पानी पूनी करना है वो बाद में थोड़ा बहुत आप रखें, बट यू आर नॉट गोइंग टू कैरी योर बेड और यू आर नॉट एनीथिंग लाइक दैट. What he did was कि वो वाटर चैनल्स के साथ उसकी शिप्स भी साथ चला करती थी, और उन शिप्स के अंदर क्या होता था, वाटर होता था एंड फूड सप्लाईज एंड ऑल दोस टेंटिंग वगैरह सब कुछ उनकी शिप्स में होता था. सो ऑन द हॉर्स देयर वाज नथिंग. सो व्हेन दिस आर्मी वुड मूव, तो वो शिप्स जहाँ पे उनको अलेक्जेंडर को पता होता था कि हमने यहाँ पे रुकना है, तो शिप्स पहले ही वहाँ पे आ चुकी होती थी. सो इट वॉज इन सच एन इंटीग्रेटेड मैनर कि जैसे ही वो फौज एक जगह पहुंचा करती थी वहाँ पे उनका सारा कुछ मटेरियल होता था, एंड दीज आर्मी वुड डू इट फ्रॉम दैट, टेक देयर सप्लाईज फ्रॉम दीज शिप्स. सेकंड, उसने एक ऑर्डर रखा हुआ था कि जितना भी है वाटर वो सिर्फ आर्मी मेरा वाला जो ये पानी जो शिप्स लेके आ रही हैं ये पिएंगी. बिकॉज when these armies would drink water from different regions, so another very big problem is कि उनको क्या हो जाया करता, डायरिया हो जाया करता था. and if one person is suffering from that, सारी फौज पानी तो वही पिएगी and they would get sick. So he had very strict orders that you are not going to drink water from any source except from the water that we are carrying, and because that would make the armies sick. So that's why when you trace back, such a classic kind of manager who manages everything, uski supplies bilkul saath saath managing the chains of supply, so Alexander was
one of them. So when you trace back history, it's not the recent phenomena. It has been there for such a long time. ठीक है. Now when we talk about in presence, अब हम क्या बात करने लग पड़ता है, हम word supply chain के साथ एक लिया कि value network. अब आपके real time decision systems आने लग पड़े. उसके बाद synchronized and collaborative extended network और supply chain integrative management आ गई. हमने 2000s के अंदर concepts लेके आए. 2005 के अंदर हमने क्या कहा कि responsiveness, supply chain management. 2008 के अंदर हमने अब ग्रीन होने लग पड़े तो हमने कहा सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए. और 2010 के अंदर अब क्या आ रहा है, मल्टी फर्म कोलैबोरेशन. मल्टी फर्म कोलैबोरेशन के अंदर हम क्या बात करते हैं, और 2015 के अंदर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट जीनोमिक्स, कि आप जेनेटिक मॉडल्स, डीएनएज आप देख रहे होते हैं सप्लाई चेन्स के और फिर आप उनको डिज़ाइन कर रहे होते हैं. मल्टी फर्म कोलैबोरेशन, टैलेंट रिसोर्स स्वैपिंग, उसके बाद आपकी नॉलेज डिपेंडेंट प्रोसेस ऑटोमेशन आ गई, इंटेलिजेंस रोबोटिक्स आ गए हैं, उसके बाद एक्सट्रीम पोस्टपोनमेंट आ गई है, और ये जो मैं अभी आपको बताया था नैनो जीनोम सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी. दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन नाउअडेज. सो आजकल हम एट द नैनो लेवल हम सप्लाई चेन्स को मैनेज कर रहे हैं. व्हेन यू आर लुकिंग एट द बायोलॉजिकली, जब जेनेटिकली सारी चीज़ों को देख रहे थे, इसी तरह हम सप्लाई चेन की भी जेनेटिक्स के अंदर चले गए हैं. दैट इज़ nano genome supply chain technology. Now there are two ways. हमने कहा था responsiveness के अंदर आ जाता है from push to pull and responsiveness and option and operational reality. दो मॉडल्स हैं सिमिलर जो कि हम बात करते हैं, जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, परफेक्ट मोनोपोली के अंदर पड़ा था. एक तो होता है एंटिसिपेटरी पुश बिजनेस मॉडल एंड पुश मॉडल, और एक होता है रिस्पॉन्सिव ड्रिवन बिजनेस मॉडल, कि जब कोई चीज़ आई फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. अब एंटिसिपेटरी बिजनेस मॉडल के अंदर क्या होता है कि जी इट इज़ फोरकास्ट ड्रिवन, कि आपको पहले से डिमांड पता है, यू नो द डिमांड एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड इसके अंदर हमारी क्या होती है, इट इज़ अ पुश मेंटालिटी, कि भी चीज़ें होने वाली हैं, लेट्स वर्क ऑन इट. गर्मी आने वाली है, लेट्स स्टार्ट मेकिंग एयर कंडीशनर्स. ये ना हो कि गर्मी आए तो फिर हम एयर कंडीशनर्स बनाएंगे. नो, आपके प्रोसेस कैसे चलता है, यू हैव योर फोरकास्ट and very good, extraordinary good forecast. Then you start buying the components and materials. उसके बाद you are manufacturing, आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, फिर वो स्टोर में चला जाता है, वेयर हाउसिंग, फिर आप सेल करते हो और फिर वो डिलीवर हो जाता है. ठीक है, दैट इज़ बेसिकली द एंटिसिपेटरी बिजनेस मॉडल. रिस्पॉन्सिव बिजनेस मॉडल क्या होता है, इट्स एंड कास्ट ड्रिवन, पुल मेंटालिटी, रिक्वायरमेंट्स बेस्ड. सबसे पहले आपको ने कोई प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद फिर आपने बेच दिया, उसके बाद फिर आपको और डिमांड आ गई, देन यू बाय कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, फिर आपने उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर आपने डिलीवर किया. सो दैट इज़ अ लिटिल बिट. अब इसके अंदर आपकी सप्लाई चेन को क्या होना पड़ता है, दैट हैज़ टू बी वेरी एजाइल, इट हैज़ टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव. अगर आपकी सप्लाई लेट आ रही है तो यू कैन नॉट मीट द मार्केट टारगेट्स. Now how you are going to achieve the responsiveness. अब अगर आपने responsiveness को देखना है तो there are 3 steps. Number 1, achieving integrated logistics, कि आपको logistics highly integrated होने चाहिए, leveraging collaborative management होनी चाहिए, and achieving EERS value performance. अभी आगे चल के I'll explain each and one of them. What is achieving integrated logistics? Achieving integrated logistics क्या होता है, the process of moving and positioning inventory to meet the customer requirements at the lowest possible total cost to serve. ठीक है, कि आपकी कॉस्ट कम हो जाए, लेकिन आपने इस तरीके से उन सारे लॉजिस्टिक्स को मैनेज किया हुआ कि आपको वो चीज़ उसी टाइम पे, राइट टाइम पे आपको मिल जाए. इसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं, नंबर 1 इज़ योर टाइम एंड प्लेस पोजिशनिंग, नंबर 2 इज़ योर लोएस्ट टोटल कॉस्ट, नंबर 3 इज़ योर एसेट मिनिमाइजेशन, एंड नंबर 4 इज़ योर सप्लाई चेन कनेक्टिविटी, कि कितनी ज़्यादा आपस में कनेक्टेड है. नंबर 2 दैट इज़ बेसिकली लेवरेजिंग कोलैबोरेशन मैनेजमेंट, और इसी को हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन कोलैबोरेशन भी कहते हैं. और अब सप्लाई चेन कोलैबोरेशन क्या होती है, इसके अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट लोगों ने अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अंदर डिफाइन किए हैं. अब ये क्या करते हैं कि सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारों के क्या हैं, कॉमन गोल्स हैं, उन कॉमन गोल्स को वो क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं. अब शेयर क्या कर सकते हैं, दे आर शेयरिंग आइडियाज़, दे आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, दे आर शेयरिंग द प्रोसेस, नॉलेज, रिस्क, रिवॉर्ड्स, ये सारे वो शेयर करते हैं. उसके बाद कोलैबोरेट क्यों करते हैं, बिकॉज इट एक्चुअली मेक्स मोर चांसेस टू एंटर इनटू न्यू मार्केट्स. इट चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वैल्यू एंड प्रॉफिट इक्वेशन.
कॉर्नरस्टोन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और आजकल कौन से मेथड्स लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये डायग्राम देखें, इसके अंदर आप देखेंगे व्हाट इज़ द EER इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन, और इसी के अंदर एक और टर्म आप देख रहे होंगे, दैट इज़ योर बुलविप इफेक्ट। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था बुलविप इफेक्ट का, जो कि आगे मैं चल के अभी आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर आप देखें सप्लायर्स क्या करते हैं, सप्लायर्स ने स्केजुलिंग की हुई है, कोलैबोरेट किया हुआ है अपने मैन्युफैक्चरर के साथ। जैसी मैन्युफैक्चरर को ज़रूरत होती है सप्लायर उसको दे देता है। और मैन्युफैक्चरर को क्या है, मैन्युफैक्चरर को बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से डिमांड पता चल रही है, और डिमांड कौन आपको बता रहा है, योर रिटेलर एंड योर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर। और इन सारों ने क्या किया हुआ है, कोलैबोरेटिव प्लानिंग की हुई है, एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कस्टमर्स हैं, मटेरियल सप्लायर्स हैं और सर्विस सप्लायर्स हैं। कस्टमर्स को क्या होता है कि कस्टमर्स के लिए रिड्यूस्ड इन्वेंट्री होती है, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद लोअर ऑर्डर मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, हाई ग्रॉस मार्जिन्स होते हैं, बेटर एलोकेशंस ऑफ प्रमोशनल बजट्स होते हैं। मटेरियल वालों के लिए, क्योंकि आप साथ साथ आप मटेरियल दे रहे हो, जैसे जैसे वो यूज़ हो रहा है वैसे वैसे आप उसको कर रहे हो, तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट्स कम हो जाती हैं, वेयर हाउसिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, और स्टॉक आउट कंडीशंस आपकी एज सच नहीं होती। सर्विस सप्लायर्स को क्या होता है, ये जो आपके ट्रांसपोर्ट में जो होते हैं उनकी फ्रेट कॉस्ट्स कम हो जाती हैं, फास्टर एंड मोर रिलायबल डिलीवरी होती है, रिड्यूस्ड डिप्रिसिएशन एंड लोअर फिक्स्ड कॉस्ट्स, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू इम्प्रूव्ड customer service and more efficient of human resources. Now this is basically your collaboration, SC collaboration spectrum. अब अगर आप इसको स्पेक्ट्रम में देखें तो on your horizontal axis you are looking at number of relationships, ठीक है, and on the vertical axis you are looking at extent of collaboration. ये भी different stakeholders हैं, कितने ज़्यादा stakeholders हैं, and what is there actually the collaboration among each other. Now when you are looking into the horizontal axis, उसके ऊपर दो boxes हैं, one is transactional and another one is low return, ऊपर आ जाता है non viable, and in this way. So number of relationship on the extreme side it's many, और आगे जाके वो few बन जाते हैं। इस साइड पे many है और इस साइड पे few हैं। इस साइड पे आपकी collaboration limited है और ऊपर वाली साइड पे आपकी collaboration क्या है, extensive है। So let me just tell you again. Horizontal axis is basically number of relationships. Vertical axis is basically your collaboration, extent of collaboration. इस साइड पे अगर आप देखें on your left hand side आपकी जो number of relationships हैं they are many, ठीक है, ज़्यादा है number of relationship। अगर आप इस साइड पे देखें तो आपके number of relationships क्या आ जाते हैं, they are few. On this side of collaboration you have limited collaboration, on the top side you have extensive collaboration. So इस तरह आपकी ये four quadrants, four boxes आपके बन जाते हैं, ठीक है। Now अगर आप फर्स्ट बॉक्स देखें यहाँ पे नंबर 1, so नंबर 1 बॉक्स में लिखा हुआ है the number of relationships is many and collaboration is limited. रिलेशनशिप ज्यादा है, कोलैबोरेशन लिमिटेड है, तो हम कहते हैं किस किस्म की ये है, इट इज अ ट्रांजैक्शनल कोलैबोरेशन। ट्रांजैक्शनल कोलैबोरेशन बस ठीक है, आवर रिलेशनशिप इज क्या, मैंने पैसे दिए आपने मुझे काम कर दिया, दैट्स इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेम एरो। नंबर 2, नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स अगेन मेरे मैनी हैं लेकिन एक्सटेंट ऑफ कोलैबोरेशन थोड़ी सी ज्यादा हुई है। अब इसमें क्या हो जाता है कि आई हैव अ कोऑपरेटिव कोलैबोरेशन, वी बोथ आर गेटिंग अलोंग, ज्यादा कोलैबोरेशन है और नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स भी ज्यादा है। लेट्स मूव अ लिटिल बिट मूव फॉरवर्ड। नाउ ओवर हियर नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स क्या हो गए हैं, दैट इज मूविंग फ्यू। अब आपके सप्लायर्स या वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड व्हाट इज हैपनिंग, दैट माय एक्सटेंट ऑफ कोलैबोरेशन इज बिकमिंग एक्सटेंसिव, इट इज इंक्रीजिंग। सो नाउ इट्स अ मोर फ्रॉम cooperative I have moved towards coordinated. Then comes the last extreme and that's basically that अब जो मेरे number of stakeholders हैं, number of relationships हैं, they are few. Just toss back the example that I gave you in terms of your Starbucks, yeah? So वहाँ पे मेरे कम हो गए हैं but I have an extensive collaboration.
We are on the same page, we are thinking alike, our goals are mutual. So what happens at that point? Now this is basically what my ultimate goal is, or what every supply chain wants to achieve, is that is basically synchronized collaboration. So from where we moved from transactional, more but less collaboration, to move towards cooperative. From cooperative, I moved towards collaborative, and from collaborative, I've moved towards synchronized. But our major goal is that we want to have less number of relationships, but have maximum or a highest number of collaboration with them. So the extent of collaboration has to be extensive. This is what I'm trying to achieve, and in this way you would see कि जो मेरी ये जो matrix बनती है, और इसको हम क्या कहते हैं? Supply chain collaboration spectrum. Now over here I'll just read out what this slide is saying. Like, hopefully you have understood what that matrix actually means. Now the green arrow describes the increasing complexity and the sophistication. जैसे जैसे आपके information system बेहतर हो रहे हैं, जैसे जैसे आपका system infrastructure बेहतर हो रहा है, decision support system बेहतर होता है, planning mechanisms बेहतर हो रहे हैं, information sharing हो रही है, process understanding हो रही है, उतना ही ज़्यादा मैं क्या हो रहा हूँ? I am moving towards synchronized collaboration. Higher level of collaboration imply that need for both trading partners to have equivalent level of supply chain maturity. जो Walmart कहता है कि जी supply chain maturity होनी चाहिए, so they are actually looking into synchronized collaboration. And synchronized collaboration demands joint planning, research and development, sharing of information, and processing models, and moving to real-time customer demand information throughout the supply chain. यानी आपकी जो demand from customer है वो real time हो, 10 साल वो 6 महीने के बाद ना आपको data दे रहे हो what the customer is saying or what the customer is giving feedback in those terms. So that is basically your supply chain spectrum. When we are talking about that, how the supply chain spectrum, or how we can achieve this supply chain collaboration, we need to first collaborate internally. अगर आप internally अच्छे तरीके से collaborate नहीं कर सकते, you can't go out for external collaboration. Then you talk about कि help the partners to work with you. अब आप क्या करते हैं? Partners के साथ आप काम खुद कर रहे होते हैं. उसके बाद then start small and stay focused on what you want to achieve in the collaboration. We have to start at a smaller level. Then we have to advance our information technology capabilities only to the level that you expect your partners can manage. You can't just say कि मेरी IT capacity इतनी ज़्यादा है और आपका जो collaborator है, जो आपका जो partner है, जो आपका supplier है, उसकी IT capacity कम है. They have to be synchronized. They have to be matched up. Put a comprehensive metrics program in place that allows you to monitor your partners' performance. एक दूसरे का performance का measure करते हैं and make sure that people are part of that equation. उसके बाद systems do not replace people. No matter आप कितना ही अच्छा system ले आए, कितना ज़बरदस्त आपने internet system, IT system, decision support system लगाया, but if people are not into it, then your system is not working perfectly. उसके बाद make sure your organization is populated with competent professionals who have done this before. यानी आपने ये चीज़ें पहले की हुई हैं. Third, and the important part आ जाता है कि जी what is the EER's value performance model. EER से क्या बनता है? Efficiency, relevancy and sustainability. It's basically कि आपकी जो supply chain है वो क्या आपको दे रही है? आपको एक value देती है, आपको एक service excellence देती है, और उसके अंदर क्या है? आपकी effectiveness है. When you are saying कि जी my costs have reduced, when my costs have reduced, that is basically you have gotten efficiency. Number two, if your customer value generation, के customer आपके product को value करता है, customer is buying your product all the time, then there is relevancy. Customer is interested buying your product. अब third क्या होता है कि जी आप अपने process के अंदर continuous improvement रखते हैं. That is basically your sustainability part. Now this is again Hershey जो chocolates हैं उसका supply chain है कि जी suppliers हैं, फिर suppliers पहले raw materials कह रहे थे, फिर further और वो थोड़ा सा value add करके और suppliers आ जाते हैं, फिर factories आ जाते हैं, फिर आपके warehouses हैं, फिर retailers हैं, और फिर आपके customers हैं. It's another simple supply chain.
अब हर्शी की एग्जांपल है एक। हर्शी क्या कहता है, चॉकलेट फैक्ट्री जो इनबाउंड ट्रैफिक है, जो उसकी पहले वाली है, बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स के उनकी कोका बीन्स आते हैं, उनकी शुगर आती है, उनकी वेयर हाउसिंग और उनके इन्वेंट्री कंट्रोल है, दैट इज बेसिकली जो आउटपुट outbound traffic that is basically 1 billion pounds of chocolate manually. उसके बाद 12 थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हैं, 2 उसके रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, 14 उसके वेयर हाउसेज हैं और 12 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनको आप देख लें, इसको जब आपने इंटीग्रेट करना है, नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। कहाँ पे उसने इतनी चॉकलेट वो लेके आ रहा है, कहाँ पे वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को भी यूज़ कर रहा है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, उसके बाद चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 12 उसके हैं, और इनको उन्होंने इस तरीके से इंटीग्रेट करना है सो दैट अगर इस डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ प्रॉब्लम होती है, सारों को पता चलता है, एंड दैट प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स। सेकेंड आपकी आ जाती है, दैट इज योर ब्लैक एंड डेकर supply chain. Black and Decker की क्या है? There are 4,000 to 5,000 to 6,000 suppliers worldwide about Black and Decker. उसके बाद 70 आपके worldwide manufacturing plants हैं, 20 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, मार्केट प्रोडक्ट्स आपके 58 कंट्रीज के अंदर उसकी आउटरीच है। उसके बाद सप्लायर्स मार्केट ऑन जेट, जस्ट इन टाइम के प्रिंसिपल पे वो काम करता है। 6 सिग्मा भी इसी ने अप्लाई किया था, और 3 to 5 उसका ऑर्डर साइकिल टाइम है। नाउ यू कैन इमेजिन इतना बड़ा नेटवर्क हो एंड हाउ इफेक्टिवली दिस ब्लैक एंड डेकर इज वर्किंग ऑन इट्स सप्लाई चेन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, with this example, I would like to conclude that supply chains are important. Supply chains are the heartline of any organization. Now you can see, अब अगर आप इसको पाकिस्तानी context के अंदर लेके आते हैं तो supply chain की जो decisions हैं वो बहुत important हैं. Now we have realized in our corporate sector कि जी supply chain को it's not just procurement, it's not just operations, it has every organ of the business. ठीक है, फ्रॉम सप्लायर से स्टार्ट होकर आपके कस्टमर्स तक आते हैं, इसलिए अब आपके डेली फीडबैक्स लिए जाते हैं, डेली उसके मॉडल्स बनाए जाते हैं. सो देयरफॉर वंस वी आर लुकिंग एट द सप्लाई चेन, नाउ यू कैन स्टार्ट गेटिंग द फील कि हम इसको ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी के साथ कैसे लिंक अप करेंगे. नाउ दिस इज समथिंग बिग. ठीक है, तो जब हम सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, विच इज part of your operation strategy, how you have to link up, because over here it's not just one firm, it is not just one supplier, it is not just one distribution center or one warehouse, there are so many, क्योंकि कंपनीज अब क्या होती जा रही हैं, they are global in nature. ठीक है, और हर लोकल मार्केट के अंदर when they are actually distributing their product, तो हर कस्टमर की क्या है रिक्वायरमेंट फर्क है. My requirement of electronics would be different as compared to UAE, as compared to UK. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेंड है. अब आपकी सप्लाई चेन कितनी इफेक्टिव हो कि आप 3 to 5 डेज में एक UAE के भी एक कस्टमर की भी डिमांड पूरी कर रहे हैं, और एक आप पाकिस्तान के भी कस्टमर की डिमांड पूरी करते हैं, और एक आप अमेरिका के भी कस्टमर की डिमांड पूरी करते हैं, ऑल साइमल्टेनियसली. सो how to manage these chains of supply, that is really important, and how much responsive it is. ठीक है, responsive supply chains is right now the name of the game. Effective supply chain is right now name of the game. So we have to understand that how these supply chains work, what are the functionalities of these supply chains. Now you have to dig deeper, और अब अपने वो जैसे कहते हैं ना, open up your minds and see कि जब हम अब operating strategy बनाते हैं, it is not just कि जी आपने market को लिया और आपने उसको लिया, आपने रिसोर्सेज को लिया, उसके अंदर आप क्या आ गया, हमने कैपेसिटी को पढ़ा, हमने सब्स्टिट्यूट स्ट्रैटेजीज पढ़ा, एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज योर सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी. सो again, go through it. In your folder I'll be placing one of the basic articles on your supply chain, so read through it and read these slides, and then you have a better idea that what we are talking about. In the next few lectures we will be talking about green supply chain and how your supply chain is related with your operating strategy. Till then, have a nice time and enjoy. Take care. Allah Hafiz.